राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद थोड़ी देर हवा में थी, यहाँ पे रन आउट का खतरा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, खराब कॉलिंग यहाँ पर, खराब कॉलिंग, क्योंकि गौरव घोषालकर रन लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये 440 नहीं 880 वोल्ट का झटका मिला है टीम प्रणीत 11 सावरोली को। देखिए, एक ज़माने में मैंने मैच देखा था ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वहाँ पर इसी तरह लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण ने सचिन तेंदुलकर को रन आउट किया था। लेकिन उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण का एक रौद्र रूप हमने देखा, आक्रामक पारी उन्होंने खेली थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी हासिल की थी। गौरव घोषालकर रन आउट, ये विकेट इट्स अ कंप्लीट सुसाइड। इसे क्रिकेट में हत्या नहीं आत्महत्या कहा जाता है। ये आत्महत्या होती हुई नजर आई। खराब कॉलिंग, दोनों का आपसी तालमेल में कमी नजर आई। वैभव मेहतर, हार्दिक पांड्या इस टीम के, रोहित पाड़गे लगातार 2 डॉट गेंदें आ चुकी है। गोपाले का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, योगेश गोपाले का, क्योंकि पहले मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच। और मैंने पहले ही कहा था, ये जो प्रणीत जंगम की मुलगांव टीम है, सुनील अन्नाशेड़ के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुलगांव, इन्होंने कई बड़ी टीमों को सदमा दिया है। सदमा देने वाली टीम के नाम से ये मशहूर है। 1 रन जरूर मिला, टोटल आ चुका है 1 रन से खाता खुल चुका है टीम सावरोली का। टीम सावरोली के साथ साथ रन मशीन रोहित पाड़गे का, मेहतर, इनमें पोटेंशियल है, इनमें इस मैच को लंबा खींचने की ताकत है। इन्होंने गेंद हवा में जरूर खेली है, गेंद हवा में, और इसी के साथ वैभव मेहतर के बारीगान देखिए, स्वामी देशमुख इस टीम के फ्रेंचाइजी देखिए जोश में आ चुके हैं, क्योंकि 2 विकेटें जा चुकी है। प्रणीत 11 सावरोली की टीम अब संकट में आ चुकी है। हर हाल में पूरा 24 गेंदों तक रुकना होगा रोहित पाड़गे को, वरना इनसे कोई गड़बड़ी हुई तो रनों का अंबार खड़ा करने का जो सपना देखा है प्रणीत 11 सावरोली ने, वो सपना अधूरा होगा। कल क्या रिवर्स स्वीप मारे अजिंक्य दरगे ने, तारीफ करनी होगी उनकी भी। एक जमाने में हमने अविनाश पालंडे की भी ऐसे रिवर्स देखे थे, लेकिन कल जो अजिंक्य दरगे ने खेले उसमें क्लास था, गुणवत्ता थी। आदित्य भैसरे यंग टैलेंट, लेकिन ये गेंद हवा में, ये भी शायद लटकने वाले थे, लेकिन क्या छोड़ा, मिले 2 रन। साथ देना होगा अब रोहित पाड़गे का आदित्य भैसरे को। ऐसा नहीं है, 1 ओवर में भी मैच का नक्शा बदल सकता है, रोहित पाड़गे में वो क्षमता है। उस क्षमता को दिखाने का वक्त आ चुका है, पूरा खेलना होगा उन्हें 4 ओवर। योगेश गोपाले, उसने की अपील, ओवर की हुई समाप्ति 6 गेंदों की समाप्ति पर, यानी कि पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल आ चुका है 3 रन। क्या गेंदबाजी हो रही है योगेश गोपाले की, और इसीलिए मैंने कहा इस टीम के जो कप्तान है प्रणीत जंगम, ये संजय सोलंकी से कम नहीं है। हमेशा दिमाग लगाते हैं, अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, चाहे सामने टीम बड़ी हो या छोटी हो, किसी को भी ये हल्के में नहीं लेते, लड़ने का जज्बा तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रन मशीन को इन रनों को 40 तक पहुंचाना है, जो 3 है। आने वाली 18 गेंदों में 35 प्लस रन किस प्रकार से आने चाहिए, ये सोचना होगा रोहित पाड़गे को। रोहित पाड़गे को ये सोचना होगा, रुकना होगा। गेंदबाज प्रणीत जंगम, खुद कप्तान इस टीम के,
राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? रोहित पांड्या क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन आ चुके हैं। अब मिडिल ऑर्डर को कुछ अच्छा कर दिखाना होगा। टीम कैच आउट है क्या ये? यहां से नजर भी नहीं आ रहा है ड्यू फैक्टर की वजह से, लेकिन ये कैच का विकेट यहां पे मिलता हुआ तो संकट में आ चुकी है। 2 विकेट जा चुकी है स्वामी देशमुख, इनके 3 विकेट जा चुकी है स्वामी देशमुख, इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। राज घोसालकर अब सावरणी के कप्तान मैदान के अंदर, 2 कप्तानों के बीच की जंग हमें देखने का मौका मिलेगा। प्रवीण शेठ बैलमारे, इन्होंने तो मार्केट में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, लेकिन राज घोसालकर को एक कप्तानी पारी खेलनी होगी। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बैक टू द बॉलर। क्या गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में महज 3, इस ओवर में अब तक एक भी रन नहीं आया है, यानी कि 8 गेंदों में महज 3 रन। प्रणीत देशमुख इस ओवर, प्रणीत जंगम इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद। तीसरी गेंद करेंगे राज घोसालकर। दिखाना होगा कि मुझे कप्तान क्यों चुना जा चुका है। समय आ चुका है यह बताने का। मिडिल ऑर्डर का स्पेशलिस्ट हूं मैं। इस गेंद को खेला टीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर। 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा? कॉलिंग की कमी नजर आई गौरव घोसालकर के विकेट के बाद। जिस तरह कल हमने देखा हार का मैच, मुनीर पटेल के आउट होने के बाद पूरी टीम का मोराल डाउन होते हुए हमने देखा, कुछ इस तरह यह मैच मुझे नजर आ रहा है गौरव घोसालकर के आउट होने के बाद। लेकिन अभी भी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपको मौका मिला है तो उस मौके का फायदा उठाओ, हीरो बनो। आदित्य आदित्य भैसरे स्ट्राइकर एंड पर। प्रणीत की ये गेंद, फील्डिंग देखिए, गलतियां नहीं हो रही है। और जब गलतियां नहीं होती है ना तो टीम का मोराल अप होता है, यानी कि ऊंचा होता है। डॉट गेंद आई, टोटल 4 रन। कुछ इस तरह की हालत जरूर थी सेमीफाइनल में। सिद्धेश दत्त जिन्होंने इस टी शर्ट्स को स्पॉन्सर किया है, जो पहना हुआ है प्रणीत 11 सावरणी ने, उनकी टीम के, ये ऊंचा खेला है। क्या ये होगा 6? क्या ये होगा कैच? लेकिन पहुंचा पहुंचा पहुंचा। सांसें अटक चुकी थी सावरणी के सपोर्टर्स की, लेकिन ये नंबर 6 आया। आदित्य भैसरे, इस यंग टैलेंट को दिखाना होगा कि मैं हूं ना, डरिए मत। 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 10 रन। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जयवंत तटकरे, देखिए जयंत तटकरे साहब इधर उधर घूम रहे हैं। थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल है प्रणीत 11 सावरणी के लिए। क्या गेंद डाली आउटसाइड ऑफ स्टंप, यॉर्कर। 12 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। एक छक्का आने के बावजूद भी टीम का टोटल 3 विकेटों के नुकसान पर प्रणीत 11 सावरणी घरेलू मैदान पर खेल रही है 10 के योगदान पर। राज घोसालकर का चलना जरूरी है, ताकतवर हिटर है। कई मैचेस मैंने इनको जितवाते हुए देखे। 2 गेंदे 12 रन, वहां पर मैंने इनको 2 छक्के मारते हुए देखा है। 6 गेंदों में 19 रन, वहां पे मैंने इनको 3 छक्कों से 18 रन वसूलते हुए देखा है। मैचेस को जितवाए इन्होंने, कई रिकॉर्ड इनके अच्छे हैं। लेकिन इस वक्त देखिए, इस वक्त हावी है सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुड़गांव। उमाशंकर, गेंदबाजी का अटैक देखिए, शुरुआती 2 गेंदबाजों ने अच्छा किया। उमाशंकर भी उनके मेन स्ट्राइकर बॉलर में से एक हैं, लेदर क्रिकेट खेलते हैं। सावरणी संकट में जरूर है, लेकिन कप्तान को दिखाना होगा कि सेनापति अगर फ्रंट पे आकर लड़े
तो बॉलिंग करने वाले को एक मौका मिलेगा, जो बॉलिंग करेंगे दूसरे सत्र में सावरोई की तरफ से, उन्हें एक मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब देखना ये होगा क्या ये रन 35 तक जाते हैं, कम से कम 35 तक जाना ज़रूरी। ड्यू फैक्टर की वजह से 35 रन का भी बचाव हो सकता है। उमा शंकर राज घोसालकर के लिए, और ये देखिए राज घोसालकर की ताकत, मैंने पहले ही कहा था। 6 गेंदों में 19 रन इन्होंने चेस किए हैं, 2 गेंदों में 12 रन इन्होंने चेस किए हैं। इनसे बहुत कुछ उम्मीद हम रख सकते हैं, क्योंकि ये कप्तान है इस टीम के। पहली गेंद के ऊपर 6 आया और इतना लंबा। गेंदबाज उमा शंकर 7 रन अब तक दे चुके हैं। टीम का टोटल 17 रन, 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 1 रन चुराने की कोशिश डायरेक्टेड होती तो शायद रन आउट का मौका मिलता। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष। क्या राज घोसालकर आक्रमण करेंगे? क्या वो अपना पुराना अंदाज दिखाएंगे? कप्तान है, कैप्टन को लड़ना ही होगा, एक सेनापति को लड़ना ही होगा। महाराज जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार। इन्हें बाजी बनना होगा अपनी टीम के लिए। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। राज घोसालकर ऑन फायर। निर्णायक मोड़ पर कल इनकी काफी आलोचना की जा रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था इनकी बल्लेबाजी का, लेकिन मैंने भरोसा रखा था इनके ऊपर। मैंने कहा था इन लोगों को ये बंदा आपके काम आएगा, और वो काम कर रहा है। ये हमारे सामने ये जो खिलाड़ी बैठे हुए जर्किन पहने, उनके सामने ही उनकी खिंचाई चल रही थी। हर्षद चौगले, अब अंपायर को डिसीजन देना होगा। आदित्य भैसरे के बारी का अंत हो चुका है। तो निश्चित रूप से तांडेल कहाँ गए हमारे, है ना? बजाओ फिर। जा रहे हैं, लेकिन राज घोसालकर ने जो क्लास दिखाया आज, जो उनकी पावर हिटिंग है, हमेशा जो सावरोड़ी के लिए काम करती है पावर हिटिंग। टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राज घोसालकर जानते हैं कि किस तरह से इन रनों को 40 तक पहुंचाना है, 35 और 40 के दरमियान पहुंचाना है। गेंदबाज उमा शंकर, इस ओवर की आखिरी गेंद। और ये देखिए राज घोसालकर के बल्ले से एक और लंबा छक्का। अंपायर का इशारा आ चुका है। टीम का टोटल 28। जिसे खोटा सिक्का समझ रही थी प्रणीत 11 सावरोड़ी, वो उनका खरा सोना निकला, खरा सोना। अट्ठाईस 28, 22 थे, उसके बाद 6 आया, 28। अब इस आखिरी ओवर में राज घोसालकर को कितनी गेंदें खेलने का मौका मिलेगा, यह भी सवाल है। गेंदबाज तेजस, राहुल, इनमें भी क्षमता है छक्के लगाने की। गेंदबाज तेजस शाह, डे क्रिकेट में इसी ग्राउंड के ऊपर इन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। राहुल गोपाले ने, क्या वो यादें हमें दोबारा देखने का मौका मिलेगा?
जो हमारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड है इनका इस ग्राउंड के ऊपर। लेकिन हमारे सामने रिकॉर्ड वो दोबारा साबित भी कर सकते हैं। मजा आ रहा है। शुरुआती 2 ओवर ऐसा लगा था पलड़ा भारी है सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुलगांव का। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, एक ही रन मिलेगा। लेकिन देखिए, जब तक स्वामी देशमुख इस मंच पर बैठे हुए थे, विकेटें निरंतर गिरती हुई नजर आ रही थी टीम प्रणीत 11 सावरोली की। जैसे ही उन्होंने स्टेज छोड़ा, रन आते हुए नजर आए। कुछ तो गड़बड़। टोटल 29। ये एज लगा और इसी के साथ राज घोषालकर के पारी का जो सुनामी आई थी, जो तूफान आया था मैदान के अंदर, वो थम चुका है। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है आने वाले बल्लेबाज द्वारा। सिद्धेश चौगले को मैदान के अंदर भेजा जा चुका है। टीम का टोटल 29। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष हैं। 4 गेंदें शेष हैं। चलिए, यहां से जोर से मत बोलिए, लाइव में आवाज आ रही है। लगातार 2 छक्कों के लिए श्री गणेश स्पोर्ट्स के ओनर और खोपोली के बेहतरीन कमेंटेटर तुषार धुमा, इनकी तरफ से सिद्धेश को 500 का इनाम। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। एक रन तो जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 30 रन। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष। राहुल गोपाड़े में क्षमता है, अपनी क्षमता को मैदान के अंदर दिखाना होगा, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत करनी होगी। जयंत तटकरे साहब टेंशन में थे, लेकिन अब थोड़ा देखा उन्होंने, 25 प्लस हो चुका है, 30 के करीब टीम जा रही है। राहुल गोपाड़े अगर 100 रुपए का इनाम है राहुल गोपाड़े के लिए। 100 तो नहीं लगा सकते, लेकिन 100 का इनाम जरूर है जयंत तटकरे इनकी तरफ से, अगर एक छक्का आता है तो। टोटल 30 रन। कम से कम इन 3 गेंदों में ना 5-6 रन आने चाहिए, मैच में मजा आएगा। 35 तक पहुंचना चाहिए, कैलकुलेट क्रिकेट यही कहता है। और ये देखिए विराज पवार इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 200 का इनाम था। इस छक्के से पहले वो अनाउंस करना था मुझे, लेकिन इस छक्के के लिए भी है। और जयंत तटकरे इनकी तरफ से 100। कुल मिला के रन आ चुके हैं 36 और राहुल को मिलेंगे कुल मिला के छक्के के 300। 2 गेंदों के ऊपर और 2 छक्के आते हैं तो गेम चेंजर का क्या मिलेगा इन्हें श्री गणेश स्पोर्ट्स की तरफ से। गेम चेंजर क्या बनेंगे राहुल गोपाड़े। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, लेकिन क्या ये मिलेंगे 4? ग्राउंड के अंदर ही गेंद है, 2 रन जरूर मिलेंगे। 36 और 2 बनेंगे 38। क्या 40 तक पहुंचाएंगे? 45। देखिए यहां पर अगर 6 आता है ना तो 44 बनेंगे। 6 आता है तो और 45 का टारगेट रहेगा। देखिए इस गेंद के ऊपर बॉलर तेजस शाह ने विकेट निकाला या फिर इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने बाउंड्री या 6 लगाया तो श्री गणेश स्पोर्ट्स की तरफ से उन्हें मिलेगा गेम चेंजर का कैप। विराज पवार 200 का इनाम है हर छक्के के लिए।
और यह ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, क्या विकेट मिलेगा, क्या बॉलर को मिलेगा गेम चेंजर का कैप, और यह मिलता हुआ कल सुबह 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद मतलब दोपहर, आप श्री गणेश स्पोर्ट्स में जाके गेम चेंजर का कैप ले सकते हैं। तेजस शाह, टीम का टोटल 38, जीत के लिए 39 रनों की जरूरत, लेकिन ये रन किस प्रकार से पूरे होते हैं मुलगांव टीम के, सुनील अन्ना शेळके प्रतिष्ठान रायगढ़ मुलगांव, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी तुषार धुमाल सर। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम, पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं आपण हार्दिक असं स्वागत करूया। आमदार चषक 2024 आदरणीय प्रवीण शेठ गोविंद मारे पुरस्कृत आमदार चषकाचा दमदार सोहळा, आणि या सोहळ्यामध्ये आपण तमाम क्रीडा रसिकांचं करूया हार्दिक असं स्वागत। पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झाला, धावफलकावरती धावा लागल्या त्या टोटल 38। नेक्स्ट इनिंग मध्ये आता खऱ्या अर्थानं गरज आहे ती 39 धावांची। 24 चेंडू 39 धावांची गरज आहे। टीम मुळगाव संघाला आपण विनंती करूया, आपण मैदानामध्ये आता सलामीची जोडी पाठवा। प्रणित 11 सावरोळी संघानं मात्र दमदार खेळ दाखवला। पहिल्या 2 षटकामध्ये थोडीशी अडचण मैदानामध्ये निर्माण झाली, पण नंतरच्या 2 षटकामध्ये कमबॅक देखील आपण पाहिलं। मॅच नक्कीच मैदानामध्ये प्रेक्षकांना आनंद देईल अशी आपण अपेक्षा करूया। याआधी आवाज ऐकला, अतिशय सुरेख पद्धतीनं समालोचन करताना प्रवीण सर दुगाडे सरांचा माझ्या समवेत आता अभि पाटील सर गुणलेखाच्या भूमिकेमध्ये आहेत। सुनील अन्ना प्रतिष्ठान रायगड मुळगाव संघ आता मैदानामध्ये फलंदाजी करताना पहिल्यांदा पाहायला मिळतोय। सलामीची जोडी मात्र मैदानामध्ये गेली आहे। टीम सुनील अन्ना शेळके रायगड प्रतिष्ठान मुळगाव संघ आता मैदानामध्ये फलंदाजी करतो। 24 चेंडू मध्ये 39 धावांची गरज आहे। प्रणित आणि आकाश ही जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते, आणि गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सागर तांबडे। प्रणित 11 सावरोळी संघाचा हा गोलंदाज सागर तांबडे आता गोलंदाजी मार्गवरती आलाय। स्ट्राइक एंड वरती अतिशय सुंदर असा खेळाडू आहे, ज्यानं कमी वेळामध्ये खूप चांगली प्रसिद्धी मिळवली आहे, आणि त्या प्रसिद्धीच्या जोरावरती प्रत्येक मैदानावरती त्याची नव्यानं एक नवीन छाप सोडली जाते।
यावेळेस गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू लेट कट करण्याचा प्रयत्न, पण 30 यार्ड सर्कल मध्ये चांगल्यारीत्या या चेंडूला अडवलं जातं. पहिला चेंडू यावेळेस निर्धाव. 3 चौकारांसाठी सन्माननीय पाहुणे 200 रुपयाचा पारितोषिक आहे. संतोष रामचंद लटके, सन्माननीय गुलाब रामचंद लटके साहेबांच्या स्मरणार्थ यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक लागले. जे कवेल्याचे आमचे पाहुणे आहेत ज्यांनी हे पारितोषिक लावलंय त्यांना विनंती असेल आपण असं नसतं बा. इथे एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं मात्र फटक्याची निवड आणि पहिला फलंदाज मैदानाच्या बाहेर आलाय. प्रणित जंगम. इट्स आउट. ठोक डीजे. पुरस्कृत आमदार चषकाचा हा दमदार सोहळा. प्रणित 11 सावरोळी संघानं मात्र या सामन्यामध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केलाय. सागर क्रिकेटच्या पटलातील एक अथांग सागरातील हा चमचमता सितारा जो गोलंदाजी मार्क वरती आला. पहिल्या 2 चेंडूवरती एका मोठ्या फलंदाजाला त्यानं बाद केलं. निर्धाव पद्धतीनं 2 चेंडू खर्च केलेत. आता समीकरण मात्र 22 चेंडू 39 धावांचा आता पाहायला मिळेल. नेक्स्ट बॅटर योगेश गोपाळे. ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. अष्टपैलू दर्जाची नेहमी कामगिरी तो आपल्या संघासाठी करत आला. या आधीच्या मॅच मध्ये तो प्लेअर ऑफ द मॅच म्हणून देखील पाहायला मिळाला. जबरदस्त चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर अक्षरशः वेध घेताना निर्धाव चेंडूची होती सांगता जल्लोष केला जातोय, आवाज दिला जातोय. प्रत्येकाला इथे मात्र आनंद दिला जातोय या क्रिकेटच्या खेळाच्या माध्यमातून. या आधी सायलेंटचं वातावरण होतं, आता व्हायलेंट वाजवले जातात. डान्स इज राऊंड क्रिकेट. पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न, पदिलालित्येचा वापर, पण गोलंदाज अतिशय तिखट मारा करतोय या खेळपट्टीवरती. पुरेपूर अभ्यास करून आलेला हा गोलंदाज सागर तांबडे लागोपाठचे 4 चेंडू निर्धाव फेकतोय. हॅट्रिक साठी 500चं पारितोषिक आहे विराज पवार यांच्या माध्यमातून. पाचवा चेंडू पाहायला मिळाला, पण यावेळेस मिड विकेट क्षेत्राच्या बाहेर गोळीच्या वेगाने चेंडू आर पार गेलाय. 4 धावांसाठी नक्कीच नवचैतन्य निर्माण करणारा चौकार. सन्माननीय आमचे सांगडे या गावातील आमचे पाहुणे संतोषजी खाडे साहेबांना मी विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती यावं आणि या स्पर्धेचा आनंद घ्यावा. 4 धावा लागल्यात स्कोर कार्ड वरती. पाठलाग केला जातोय 39 धावांचा. आता उरलेत 19 चेंडू आणि विजयासाठी करायच्या त्या 35 धावा. जबरदस्त हा चेंडू. या चेंडूवरती आपण पाहतोय इन ऍक्शन मध्ये फलंदाजानं पुन्हा एकदा निर्धाव ताकदीनं खेळ केलाय. पहिल्या 6 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला आणि स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्यात 1 गडी बाद 4. येणारे आता 18 चेंडू आणि विजयासाठी 35 धावांची गरज. काय घडतंय काय बिघडतंय पाहण्याआधी ऐकू एक सुमधुर संगीत. सांगडे नवनिर्वाचित सदस्य सन्माननीय संतोष शेठ खाडे साहेबांना मी आमंत्रित करतो आपण या व्यासपीठावरती यावं. आमदार चषकाच्या दमदार सोहळ्यामध्ये तुमचं हार्दिक असं स्वागत केलं. यावेळेस फलंदाजानंही आणि गोलंदाजानंही आणि पहिल्या षटकामध्ये दावेदारी सिद्ध करताना दोन्ही संघ मात्र आपला कस पणाला लावतायत. 39 धावांचा पाठलाग करायचा होता 24 चेंडूमध्ये. आता उरलेत 18 चेंडू आणि करायच्यात 35 धावा. टीम सुनील अण्णा शेळके रायगड मुळगाव संघ मात्र मैदानामध्ये
2 हात करण्यासाठी सज्ज झालाय, पण पलीकडे विचार केला तर प्रणित इलेव्हन सावरूळी संघ घरच्या मैदानावरती आता स्वतःला सिद्ध करतोय. जय हनुमान मित्र मंडळ वनवटेचे सगळे सहकारी मित्र मात्र या मॅचचा आनंद घेण्यासाठी प्रणित इलेव्हन सावरूळी संघाला शुभेच्छा देण्यासाठी या मैदानावरती आलेले आहेत. त्यांचं देखील आपण हार्दिक असं स्वागत करूया. 3 चौकारांसाठी देखील पारितोषिके, 3 विकेटसाठी देखील पारितोषिके सन्माननीय संतोष रामचंद्र लटे साहेबांकडनं, जे आमचे कवेलाचे पाहुणे आहेत, त्यांना विनंती असेल आपण आसनस्थ व्हा साहेब आणि या मॅचचा आनंद घ्या. कवेलावरनं खास मॅच पाहण्यासाठी ते आलेले आहेत. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, पण झटका क्रमांक दुसरा. फलंदाज आकाश मोहिते मैदानाच्या बाहेर. ठोक डीजे. लटके साहेबांच्या स्मरणार्थ आपण बघतोय सातत्यानं पारितोषिके लावली जात आहेत. 3 चौकार, 3 षटकार आणि 3 विकेटसाठी सन्माननीय संतोष लटके साहेबांकडनं हे पारितोषिक आहे 500 रुपयाचं. हे पारितोषिक कोणाच्या नावावरती जोडलं जाईल? कवेलाचे हे पाहुणेत आमचे, ज्या आमदार ट्रॉफीच्या दमदार सोहळ्यामध्ये ही पारितोषिकांची लयलूट खैरात करतायत. सुधागड तालुक्यातून ते या मैदानावरती आलेत, पण खेळ मात्र पाहतायत प्रणित इलेव्हन सावरोळी संघाचा. खालापूर तालुक्यातील नामांकित संघ आहे आणि तो संघ आता स्वतःला सिद्ध करताना मैदानामध्ये. सन्माननीय संतोषजी खाडे साहेबांकडनं लागोपाठच्या 3 षटकार, 3 चौकार आणि 3 विकेटला 500 रुपयाचं पारितोषिक. गौरवचा हा चेंडू पुन्हा एकदा आसमानी सफर करतोय आरपार, स्टेडियम पार. अर्थातच बिग हिट, बिग षटकार. ठोक डीजे.
वाट सरल्यानंतर कारले डोंगरावरती बसलेल्या एकवीरा, हाकेला धावणारी नवसाला पावणारी आई एकवीरा, जिचं गीत डीजेच्या माध्यमातून ऐकतोय. कारले डोंगरावरती धुकं जसं पडतं तसंच वातावरण या मैदानावरती झालंय आणि या वातावरणामध्ये आता खेळ रंगतोय. मुळगाव विपक्ष सावरोळी. नेक्स्ट बॉलर वैभव मेहतर, सुनील अण्णा शेळके रायगड प्रतिष्ठान टीम मुळगाव, तर पलीकडे खेळतीये प्रणित 11 सावरोळी. नेक्स्ट बॉलर वैभव मेहतर करेंगे गेंदबाज गौरव से बेहतर. 12 चेंडू 28 धावांची गरज. दोन्ही संघ या मैदानामध्ये आता झुंजतायत, पण दोन्ही संघ मालक एकमेकांचे खूप जवळचे मित्र आहेत. वैभवचा हा ब्रेक पतीचा चेंडू, आशाभूत नजरेनं फलंदाज चेंडूकडे पाहत राहिला. पाहता पाहता विनय गवळी मात्र या चेंडूच्या प्रेमात पडलाय. वैभव साठी पुन्हा एकदा सुवर्ण संधी. लागोपाठच्या 2 विकेटसाठी पारितोषिक आहे ऋषिकेश बैलमारे यांच्या माध्यमातून, पण इथे मात्र जोरदार अपील मैदानामध्ये झाले. चेंडू उंच गेलता पण बॅटला स्पर्श कदाचित झाला नसावा असं पंच सांगतायत आणि मी ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. अपील जोरदार मैदानामध्ये झाली होती. मनोज पाटारे इन ऍक्शन मध्ये आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. गेले 3 रात्र आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये होते, आता खेळाडूच्या भूमिकेमध्ये मैदानामध्ये. पहिल्या मॅच मध्ये जबरदस्त झेल त्यांनी टिपला होता आणि तोच झेल कदाचित टर्निंग पॉइंट त्या मॅचचा ठरला होता, पण अशाच पद्धतीचा झेल आता या मॅच मध्ये ते पकडणार का हे रहस्य जाणण्यासाठी जाऊया मैदानामध्ये. चेंडू उंच उडालाय आणि हा चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातातनं निसटला. जसा लोण्याचा गोळा हातातनं विरघळला जातो तसा चेंडू आरपार 1 बाउन्स सीमारेषेच्या पलीकडे. नो डाऊट आल्या 4 धावा. चौकार ठोक डीजे तांडेल. जास्त वाढले असं डीजे सांगतोय. थंडीचा महिना चालू आहे, आनंद क्रिकेटचा घेतला जातोय, पण या वातावरणात कोणी शेकोटी प्लीज पेटू नका अशी विनंती केली जाते, कारण या वातावरणामध्ये खेळाडूंना होतोय त्रास. 9 चेंडू 24 धावांची गरज, पण पंच आता आपल्याकडे वळतायत, सांगतायत हा चेंडू स्वेर आहे. इथे मात्र आता येणारे 9 चेंडू आणि कराव्या लागतील त्यात 23 धावा. पाठला केला जातोय 39 धावांचा आणि या पाठला करताना मुळगाव संघाच्या धावा लागल्यात त्या 15 16. फिरून मारण्याचा प्रयत्न, फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हलतोय. मनोज पाटारे चेंडूवरती पकडण्याचा प्रयत्न करतायत, पण अंतिम क्षणाला आदित्यनं चेंडूला अडवलं. सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये झालंय. 18 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. शेवटचे 8 चेंडू आणि विजयासाठी 21 धावांची गरज. मैच अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, इस मैच में बहुत कुछ बाकी है. अंकेश जी तांबडे देखील या मॅचचा पुरेपूर आनंद घेताना मैदानाच्या बाहेर पाहायला मिळतात. ऋषी बैलमारे सातत्यानं पारितोषिक लावतायत विकेट साठी, पण इथे वाईट मात्र पडतायत. 2 चेंडूवरती जर का 2 विकेट आल्या तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. सन्माननीय ऋषी शेठ बैलमारे साहेबांच्या शुभ हस्ते. युवा उद्योजक आहेत, युवकांच्या गळ्यातलं ताईत आहेत, पण ते आता युवकांसाठी पारितोषिक देखील लावतात. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. चांगला चेंडू, इथे डॉट चेंडू जातोय. पुन्हा एकदा परिस्थिती हॉट निर्माण झाली आहे ती सुनील अण्णा शेळके रायगड प्रतिष्ठान मुळगाव संघासाठी. 7 चेंडू आणि विजयासाठी 20 धावांची गरज. सावरोळी की मुळगाव, मुळगाव की सावरोळी.
चेंडू उंच गेलाय पण लांब मात्र गेला नाही. 38 सर्कलच्या बाहेर वन बाउन्स पद्धतीने अडवला जातोय. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न सक्षेल अशक्य झालेला आहे. अपयश मात्र या चेंडूवरती आलंय आणि या चेंडूवरती धावा खर्च झाल्या त्या टोटल 2. या 2 धावांनी स्कोर कार्डवरती टोटल 21 धावा लागल्यात. 39 धावांचा बाटला करताना आता येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी 18 धावांची गरज. अशक्य ही शक्य या मैदानावरती होऊ शकतं. या मैदानावरती येऊन जर फलंदाज राहुल गोपाळे षटकार बऱ्याच दिवसानंतर मारू शकतो तर या येणाऱ्या 6 चेंडूवरती 18 धावा देखील होऊ शकतात. काय घडतंय काय बिघडतंय पाहण्याआधी घेऊया छोटीशी विश्रांती आणि ऐकूया या थंडीच्या वातावरणामध्ये गुलाबी संगीत. जांभिवली संघाला विनंती असेल तुम्ही व्यासपीठाच्या समोर यावं ही तुम्हाला विनंती आहे. दिशांजी बैलमारे यांचं देखील मी कौतुक करेल. गेले 3 रात्र आणि आजची 4थी रात्र या स्पर्धेचा ते आनंद घेत आहेत. पण आता मात्र कदाचित त्यांना खिशात हात घालावा लागेल. मॅच मध्ये ट्विस्ट नक्की निर्माण झालाय. सन्माननीय अनिलजी सांबारे साहेबांकडनं लागोपाठच्या 3 षटकारांना 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आमचे परम मित्र पत्रकार बंधू समाधानजी दिसले देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत. KTC लाईव्हच्या वाहिनीद्वारे त्यांचं देखील आपण या आमदार ट्रॉफी मध्ये हार्दिक असं स्वागत करूया. आदित्य भेसरेच्या पहिल्या चेंडूवरती केले आक्रमण आणि हा पहिला चेंडू फेकून दिलाय सीमा रेषेच्या बाहेर. बिग बिग योगेश गोपाळे ब्रँडेड षटकार. नाही मुळगाव संघ जिंकलाय नाही सावरुळी संघ हरलाय. कारण विजयासाठी 5 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज आहे. 2 मोठे फटके या मॅच मध्ये अंतर कापून देतील. विजयाचा झेंडा फडकवण्यास भाग पाडतील ते मुळगाव संघासाठी. पण या मॅच मध्ये योगेश गोपाळ्याची विकेट प्रणित 11 सावरुळी संघाची टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. आणि त्याच्या विकेट साठी मात्र 200 रुपयाचं पारितोषिक इथे लावलंय आणि ते पारितोषिक आता जमा करावं लागेल. ₹200 पारितोषिक मात्र इथे जमा झालंय आणि मॅच मध्ये ट्विस्ट देखील आलाय. ठोक डीजे. अनिलजी सांबारे साहेबांकडनं आपण पाहतोय येणाऱ्या 4 चेंडूमध्ये 2 षटकार आले तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. इकडे आपण बघतो विकेट साठी पारितोषिक लागलंय. पुन्हा एकदा विकेट आली तर जवळजवळ या विकेट साठी 500 आणि अगोदरचे 200 म्हणजे 700 रुपयाचं पारितोषिक. लोहा गरम है मार लो हातोडा लेकिन थोड़ा थोड़ा क्योंकि थोड़े थोड़े में ही मजा है. येणारे 4 चेंडू आणि विजयासाठी 12 धावांची गरज. 4-12 जे करून आले असतील ते या मॅचचा आनंद घेतात त्यांचं देखील करूया हार्दिक असं स्वागत. चेंडू उंच गेलाय आणि जेल पकडण्याची संधी. 700 की 500 पण जेल मात्र सुटलाय. रनआउटची विकेट मात्र मिळेल. इथे कोणता फलंदाज बाद होईल हे आता पंचच सांगतील.
अनंत चोगले साहेब मात्र सांगतात विकेट राहू दे, तू बॉल काढ, कारण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे डॉट चेंडू या मॅच मध्ये. ठोक डीजे. तिसऱ्या पंचांची मागणी झाली आहे भीमरच्या चेंडूसाठी. पंच सांगतायत तिसरे पंच भीमरसाठी ही मागणी केली जाते. तिसरे पंच आमचे बघा, दोन्ही संघाचे 12th मॅन फक्त इथे असतील. बघा, मी ऑन फील्डचे पंच आहेत ना, त्यांना विनंती करेल तुम्ही या. दोन्ही संघ आपल्या घरचेच आहेत. निर्णय प्रत्येकासाठी खूप महत्वाचा आहे. मी ऑन फील्ड पंचांना विनंती करेल तुम्ही या. ऑन स्क्रीन वरती जो निर्णय होईल ते ऑन फील्ड पंच मैदानामध्ये जाऊन देतील. तोपर्यंत ऐकूया एक सुमधुर संगीत. डी बारा धावांची गरज. नागेशजी खराडे आणि नितेशजी खराडे यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे विकेट हॅट्रिकला. पण इथे मात्र चेंडू उंच मारलाय आणि लांबही गेलाय. A1 क्वालिटीचा हा मॅच मध्ये ट्विस्ट आणणारा येतोय. बिग 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 षटकार. टोटल 34 धावा धावफलकावरती नोंद झाल्यात. 39चा पाठलाग केला जातोय. आता येणारे 2 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. अजूनही मॅच संपली नाहीये. या क्षणाला मात्र दोन्ही संघांच्या पाठीराख्यांचे हृदयाचे ठोके
असे वाचतायत, पण ज्यांना खरंच त्रास असेल ना बीपीचा त्यांनी हे 2 चेंडू पाहू नका. आणि कोणी जरी जिंकलं तरी सेलिब्रेशन करण्यासाठी मैदानात जाऊ नका, कारण लगेच नेक्स्ट मॅच आपल्याला खेळवायची. आजची शेवटची रात्र आहे. 2 चेंडू 5 धावांची गरज. आदित्य की फलंदाज अक्षय. पुन्हा एकदा चेंडू उंच खेळलाय आणि यावेळेस लांबही गेलाय. षटकार. चला टीम मुळगाव, आपल्याला विनंती, आपण मैदानाच्या बाहेर या.